अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम सर्कुलेशन पर एक जनरल सी एक रिव्यू देंगे। ये हमारे कुछ लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं कार्डियोवैस्कुलर के, जिसमें हमने हार्ट साइकिल के बारे में डिस्कशन की थी, कार्डियक साइकिल जो है। इसके अलावा हमने स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट के बारे में बात की थी, हार्ट साउंड्स के बारे में बात की थी, चैम्बर्स ऑफ हार्ट जो है इसके बारे में बात की, वाल्स के बारे में हमने बात की थी कि माइट्रल वाल है, जो बाइकस्पिड है, ट्राइकस्पिड है, पल्मोनरी वाल है, आयोटिक वाल है, और इन सब पर हमने डिटेल से बात की थी। ये जो लेक्चर है ये एक जनरल सी है, एक ओवरव्यू है अब बोथ पल्मोनरी एंड द सिस्टमिक सर्कुलेशन। आजकल हम इसमें आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज इसके बारे में बात करेंगे, और इसमें जो ब्लड प्रेशर है और किस तरह कंट्रोल होता है स्पेसिफिकली, और किस तरह जो है टिश्यू को ब्लड सप्लाई जब ज्यादा चाहिए तो वो कौन कंट्रोल करता है, किस तरह डिसाइड किया जाता है कि द टिश्यू जो है इसको ब्लड ज्यादा चाहिए। क्योंकि हमारे बॉडी में समटाइम्स एक टिश्यू को अगर ब्लड ज्यादा चाहिए तो दूसरे को कम चाहिए, तो फिर किस तरह ये मैनेज किया जाता है। क्योंकि अगर हार्ट जो है एज अ होल ज्यादा ब्लड पंप करेगा तो फिर तो सबको सप्लाई ज्यादा होगी, लेकिन इस तरह नहीं है, क्योंकि सबको तो ज्यादा ब्लड नहीं चाहिए, तो फिर लोकली कंट्रोल किस तरह किया जाता है, तो ये भी आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। So initially we talk about the circulation and its functions, then what are the functional part of circulation. Then we will talk about the volume, pressure, cross-sectional areas, and velocity of the blood flowing through different parts of circulation, including the arteries, the veins, the capillaries. And then we will discuss the theories the, related to circulatory functions, and to discuss the interrelationship between the flow, pressure, and resistance. So what is the equation and how they are related with each other? The function of the circulation is to service the needs of the body tissues. Now the question arises that what are the needs of the body tissues? So the body tissues की जो नीड्स है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हर एक टिश्यू को जो है न्यूट्रिएंट्स सप्लाई हो। उस न्यूट्रिएंट में जो है कार्बन, ऑक्सीजन भी आती है, आयरन सप्लाई भी आती है। सो ये तमाम के तमाम जो है ये सर्कुलेशन ही के जरिए ही की जाती है। बॉडी टिश्यू को न्यूट्रिएंट्स के अलावा जो है वहाँ पे जो मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है और वहाँ पे जो टॉक्सिन बनते हैं या जो वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं उसको उस टिश्यू से दूर लेके जाना, ये भी जो है ये एक नीड है टिश्यू की, और ये सर्कुलेशन ही कर देती है ये वेस्ट प्रोडक्ट का आप दूर लेके जाना टिश्यू सेल से। इसी तरह हार्मोन जो है ये हमारे मुख्तलिफ जगहों पे सिक्रीट होते हैं, लाइक इंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, हाइपोथैलेमस से ये सिक्रीट होते हैं, बट देयर फंक्शन दे आर इन समवेयर एल्स। Just like if we talk about suppose the luteinizing hormone, it is a hormone which is very important in the female reproductive system. The luteinizing hormone is released from the anterior pituitary gland upon the response of the gonadotropin releasing hormone of the hypothalamus. But that hormone, luteinizing hormone, is action is required in the ovary of the female reproductive system. अब ये इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है ये ओवरी तक किस तरह पहुंचते हैं, तो दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द सर्कुलेशन, बिकॉज ऑफ द ब्लड, कि ये हार्मोन्स को जो है एक जगह से दूसरी जगह को लेके जाते हैं। क्योंकि हार्मोन जिस जगह पर सिक्रेट होते हैं, जिस जगह पर बनते हैं, उस जगह पर अक्सर इसकी जरूरत नहीं होती, दे आर रिक्वायर्ड समवेयर एल्स। जैसे हाइपोथैलेमस से जो अमूमन रिलीज होती है हार्मोन, तो वो उनकी जरूरत जो है सपोज एंटीरियर पिट्यूटरी, हम इसी न्यूट्रलाइजिंग हार्मोन के पाथवे को अगर डिस्कस करें तो हाइपोथैलेमस से गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होती हैं, ये उनकी एक्शन रिक्वायर्ड है इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर, तो ये इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे आ जाती हैं, एंड दैट stimulate the pituitary gland to secrete the luteinizing hormone and the FSH। फिर ये हार्मोन जो यहाँ से रिलीज होते हैं फिर दे आर रिक्वायर्ड इन द ओवरी। ओवरी पे जब ये पहुंच जाते हैं थ्रू सर्कुलेशन, वहां से ये रिलीज करते हैं
the prostaglandin और इसी तरह जो है सारी प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन रिलीज करते हैं. ये प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन जो है दे आर रिलीज्ड फ्रॉम द ओवरी इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बट देयर एक्शन दे आर रिक्वायर्ड इन द muscles of that uterine muscles in the female reproductive system. अगर हम इस लिंक को देखें तो जहां से रिलीज होती है वहां पे इसकी जरूरत नहीं होती. तो who is responsible for the conduction of that hormones from one place to another? So this is actually the circulation, and that need is been one of the function of the that blood circulation. Another in some areas of the brain there may be deficiency of some iron, deficiency of some substances, and the other areas there may be no such deficiency, and in fact they may have abundant of those substances. So ये जो equilibrium बनती हैं, ये जो ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस होती हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, ताकि एक इक्विलिब्रियम जो है और एक एनवायरनमेंट जो है ये मेंटेन रहे टिश्यू फ्लूइड के लिए, बॉडी के लिए, तो ये भी जो है एक जरूरत है टिश्यू सेल की, और ये नीड जो है ये सर्कुलेशन. सो ये जो डिफरेंट हमने अभी बयान की, these all are the needs of the tissue and these all are the functions of the circulatory system. Now the next question is what control the rate of blood flow to the tissues, यानी कौन से टिश्यूज को ब्लड ज्यादा चाहिए, कौन से टिश्यूज को कम चाहिए. जैसे हम अगर एक्सरसाइज करते हैं, so the blood supply they are more required to the skeletal muscles, and in the same time the blood supply to the gut and to the GIT थोड़ी सी कम पड़ जाती है. On the other hand, when we are growing nothing and we are unrest and there is digestion in progress, so the concentration of the blood supply from the heart that is towards the gut towards the GIT, and at the same time there is no such blood supply to the skeletal muscles. So who is going to decide that which tissue will receive the more blood and which tissue with the less blood? So the rate of blood flow through the most tissue is controlled in the response to the tissue need to the nutrients. सो ये जो अभी हमने डिस्कस किया ना टिश्यू नीड्स, तो टिश्यू नीड ही डिसाइड करेगी कि उस टिश्यू को कितनी ब्लड जाएगी. सपोज अगर आप देखिए हम जब एक्सरसाइज करते हैं तो वहां पे स्केलेटल मसल में हमें ऑक्सीजन चाहिए ताकि वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया में ये ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ मिले और या जो है ये लिपिड के साथ मिले और हमें एनर्जी दे, और वो एनर्जी हम मसल कंट्रेक्शन में यूज करेंगे ताकि हम एक्सरसाइज कर सके. इसलिए ब्लड सप्लाई जो है ये वहां पे ज्यादा जाते हैं ताकि ज्यादा ऑक्सीजन लेके जा सके टुवर्ड्स द skeletal muscle. So this is actually the need of that tissue need है न्यूट्रिएंट्स के लिए, जिसकी वजह से, और न्यूट्रिएंट्स तो हमने कहा कि वन ऑफ द ऑक्सीजन इज वन ऑफ देम, सो दैट्स व्हाई ब्लड सप्लाई ज्यादा होगी. इसी तरह जो है फिर जीआईटी के लिए जो है, जो यहाँ पे डाइजेशन प्रोसेस उसके लिए भी ब्लड जो है उसकी चाहिए, और उसकी वजह से द ब्लड सप्लाई जो है इज कंसंट्रेटेड टुवर्ड्स द गट. सो द मेन जो आंसर है इसका कि who control the rate of blood through the tissues. So this is all the nutrients, the need of nutrients of the tissue who will decide that how much blood supply they will receive. The next is the circulation, types of circulation. So as we have discussed a little bit in the previous lecture as well, here we will give an overview that what are the different types of circulation. One is known as the systemic circulation, the other is the pulmonary circulation. In the systemic circulation, the blood is supplied from the heart to the all parts of the body except the lungs. And it is the greater part of the circulation. That's why it is also known as the greater circulation, or also known as the peripheral circulation. Pulmonary circulation is the circulation between the heart and the lungs. Now, what are the functional parts of the circulation? So we will start from the arteries, then we will talk about the arterioles, then the capillaries, the venules, and the veins. The arteries, they transport the blood under high pressure to the tissues, and this is very important, that in which functional part of the circulation the blood pressure is highest. In we can say that on the peak. So this is actually the arteries, and for this reason the arteries, they have strong vascular wall just to have resistance to that blood pressure, just to bear that blood pressure. If the blood pressure is too much and the walls are weak, so there may be rupture of those vessels. So just to combat this difficulty, just to bear this large and high
blood pressure, the walls, the smooth muscle of that arteries, they are too strong. So the blood flows at a very high velocity and with and very highest blood pressure without any damage to the arteries. The arteries, they are some small branches of these arteries. Here also the blood pressure remain high, but it is less than the arteries, and that's why they also have the strong muscular wall. So the arteries, they had strong muscular wall that can close the arteriole completely or can by relaxing dilated several fold, thus having the capability of vastly altering the blood flow in each tissue bed in response to the need of the tissue. Capillaries. अब वहां पे जिस तरह की प्रेशर आर्टरीज और आर्ट्रियोल में ज्यादा ब्लड प्रेशर होता है, कैपिलरीज में थोड़ी सी जो है ये प्रेशर कम हो जाती है। और जिस तरह की आप जानते हैं कि ब्लड प्रेशर जितनी ज्यादा होगी उतनी स्पीड ज्यादा होगी, यानी द स्पीड ऑफ ब्लड प्रेशर जो है ये इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन ब्लड प्रेशर। जितना ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा उतना फ्लो ज्यादा, उतना स्पीड ज्यादा होगा। लेकिन कैपिलरीज में हमें तो मूवमेंट जो है बहुत स्लो चाहिए ताकि उसमें एक्सचेंज हो सके। वहां पे कुछ चीजें जो हैं ये कैपिलरी से बाहर जाएंगे और कुछ चीजें कैपिलरी में एंटर हो जाएंगे। सो इस एक्सचेंज के लिए वी नीड एट टाइम एंड दैट्स व्हाई द स्पीड ऑफ द ब्लड फ्लो जो है ये काफी हद तक रिड्यूस हो जाती है कैपिलरीज। और किस तरह कम हो जाती है, इनका जो ब्लड प्रेशर है ये काफी हद तक जो है गिर जाता है, जो कम हो जाता है। एंड जैसे हमने पहले कहा कि देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द स्पीड एंड द ब्लड प्रेशर। सो ऑब्वियसली टू रिड्यूस द ब्लड प्रेशर, रिड्यूस द स्पीड, द ब्लड प्रेशर डिक्रीज इन द कैपिलरीज। ये कैपिलरीज में होता क्या है, वहां पर मुख्तलिफ चीजों की इलेक्ट्रोलाइट है, हार्मोन्स है, न्यूट्रॉन्स है, फ्लूइड है, गैसेज है, इन सब की एक्सचेंज होती है between the blood and the interstitial fluid. To serve this rule, the capillary walls, they are very, very thin and have numerous minute capillary pores permeable to water and other small molecular substances. Venules, they collect blood from the capillaries and they gradually uh, coalesce into progressively larger veins. कोलेस का मतलब ये है कि ये टू कंबाइन टुगेदर, यानी बहुत सारे विन्यूल जो है ये बन के फिर वेन्स बनाएंगे और वेन जो है फिर बन के वो वेना केवा बनाएंगे। सो वेन्स जो है these are the conduits for transport of blood from venules back to heart. Equally important, they serve as a major reservoir of extra blood. क्योंकि यहाँ पे ब्लड प्रेशर जो है थोड़ा सा कम होता है एज कंपेयर टू द आर्टरीज एंड वेन्स। सो यहाँ पे जो है स्पीड ऑफ द ब्लड थोड़ी सी कम हो जाती है और यहाँ पे जो है ब्लड देर पा रहते हैं बिकॉज ऑफ स्लो स्पीड। the blood they remain for a longer time than in the arteries. So that's why they are the major reservoir of the extra blood because the pressure in the vein system is very low. The venous wall are thin. अब आर्टरीज के वॉल क्यों स्ट्रांग है, क्योंकि वहां पे ब्लड प्रेशर प्रेशर ज्यादा होता है। अब चूंकि यहाँ पे प्रेशर ऑफ द ब्लड जो है इतना नहीं है, सो द प्रेशर ऑन द वॉल इज टू लेस, इसलिए उनकी वॉल जो है उतनी स्ट्रेंथ की जरूरत ही नहीं है, इसलिए वेंस की वॉल जो है ये काफी थिन होते हैं। Even so, they are muscular enough to contract, expand, and thereby act as a controllable reservoir for the extra blood, either a small or a large amount depending on the needs of the circulation. Volumes of the blood in the different parts of the circulation, अगर हम बात कर ले तो shown कि systemic circulation is the greater circulation. It is the greater part of the circulation, and that's why 84% of the blood is present in the systemic circulation, while the remaining 16% is in the heart and lungs. And among the 16%, 9% is in the pulmonary circulation in the lungs, and as well as in the arteries which are connecting the heart to the lungs, the pulmonary artery and the pulmonary vein, while only 7% blood that is present in the heart. So these 7% and 9% which combine together to make 16% is among the heart and lungs, and the remaining all is present in the systemic circulation. And if we divide this 84%, we can see here that arteries contain 13% of the total blood,
The arteries and capillaries, they contain the 7%, and here, uh, which we got is the reservoir of the blood, extra blood is present here. So that is the veins and venules and the venous sinuses, they all contain the 64%. So इसका मतलब ये है कि जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन का जो 84% है, इसका ज्यादातर ब्लड जो है ये होता है वेनस सिस्टम में, इन द वेन्स वेन्यूल्स एंड द वेनस साइनस में, जबकि आर्टरीज में सिर्फ 13% होते हैं, एंड आर्ट्रियोल्स एंड कैपिलरीज में 7%. सो इट मीन कि तमाम आर्ट्रियोल, तमाम कैपिलरीज में जो ब्लड होता है, दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल, दे बोथ आर इक्वल. द हार्ट एंड द आर्ट्रियोल्स एंड कैपिलरीज अमाउंट ऑफ ब्लड प्रेजेंट देयर इज equal, while the pulmonary circulation blood is more than the blood present in the arterioles and the capillaries. So that may ask, can be asked in the MCQ, that which structured with functional part of the systemic circulation that contain the higher amount of the blood. So that is the venous system, that is the veins, the smaller branches of the vein, the venules, and the venous sinuses. That is 64%. Why there is more blood in the venous system as compared to the arterial system, as we have discussed in the previous slide. So the answer is that the cross-sectional area and velocity of the blood flow, the cross-sectional area of the veins, that is too much. And that is the reason why they are having the large amount of the huge amount of the blood of the systemic circulation. If we look at here, the comparison of the cross-sectional area, so the cross-sectional area of the aorta is almost 2.5 centimeters square. Small arteries 20 centimeters square, all combined together. Arterioles, they make 40 centimeters square. Capillaries 2500, venules 250, small veins they at 80 centimeter, and the vena cava is there. So if we look at the cross-sectional area of the venules, the small veins, and the vena cava, which is at 80 and 250, that is much larger than the arterioles, small arteries, and the aorta. Now, the aorta and the vena cava, they are the analog of each other. So aorta is 2.5, it is 8 centimeters square. Then the small arteries are the small veins, they are analog of each other. So this is 20 and this is 80. But arterioles and venules को अगर हम compare करें, so this is 40 centimeters square, this is 250, which is huge difference between these two. And that is the reason उनका cross-sectional area ज़्यादा होता है. यही वजह है कि they contain the large storage of blood, they're containing the large portion of the blood of the systemic circulation. So the venous system, as comparison to the arterial system, they have the large storage of blood. The velocity of blood flow is inversely proportional to the vascular cross-sectional area. जितना cross-sectional area ज़्यादा होगा, उतनी ही जो है blood flow की जो velocity है, ये कम होगी. अब एक क्वेश्चन ये भी है आपके कि आयोटा और स्मॉल जो आर्टेरियल सिस्टम है, उसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया कम क्यों है? क्योंकि हमें प्रेशर ज्यादा चाहिए, क्योंकि हमें ब्लड फ्लो तेजी से चाहिए, तो उनकी स्पीड ज्यादा चाहिए टुवर्ड्स द टिश्यूज. सो दैट्स व्हाई द क्रॉस सेक्शनल एरिया शुड बी स्मॉल, क्योंकि जितना वहां पे डायलेशन होती है, और डायलेशन या जितना वहां पे क्रॉस सेक्शनल एरिया नेचुरली ज्यादा होता है, वहां पे स्पीड ऑफ द ब्लड उतनी ही जो है कम होगी. और जितना एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होता है, जितना वेसल कंस्ट्रक्शन होती है, या नेचुरली एक वेसल जो जितना नैरो हो जाता है, उतना ही उसका स्पीड जो है तेज हो जाता है. सो एज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वेनस सिस्टम दैट इज टू मच, that is large, that's why the pressure here is also low and the speed is also limited and reduced here. हमने पहले डिस्कस किया कि स्पीड और ब्लड प्रेशर ये दोनों एक दूसरे को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, but they both are inversely proportional to the cross sectional area. Greater the cross sectional area, lesser the pressure of the blood will be, and lesser the speed of the blood flow will be. So blood remain in the capillaries for only 1 to 3 seconds, during which surprisingly all diffusion of nutrient food substance and nutrient occur through the capillary wall. The same volume of blood must flow through each segment of the circulation each time, but the blood spends different duration in every part of circulation. Why is that so? ये जो डिफरेंट ड्यूरेशन एक जगह डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सर्कुलेशन
वहाँ पे होती है। तो इसका मेन आंसर ये है कि वहाँ की जो same volume of blood flow जो है ये each segment of circulation each minute जाती है, and the velocity of blood flow is inversely proportional to the vascular cross sectional area. अब जहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होगा तो वहां पे तो स्पीड कम होगी, जैसे हमने पहले डिस्कस किया। तो मेन रीजन यही है कि अब सब दोनों को कंपेयर करते हैं, यानी अगर हम वेन और आर्टरीज को कंपेयर करते हैं कि इनमें ज्यादा ड्यूरेशन जो है वेन्स में ब्लड फ्लो क्यों लेते हैं, उसका सिंपल सा आंसर है कि उनका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये ज्यादा होता है, क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया और स्पीड जो है ये दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सो आर्टरीज का क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है, सो देयर वाई उनका ब्लड फ्लो जो है स्पीड जो है वो ज्यादा है, जबकि वेन्स का क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है तो इसका स्पीड जो है ये कम है, और टाइम ज्यादा लेगा। स्पीड इज लेस स्लो तो वहां पे ऑब्वियसली टाइम ज्यादा लेगा। सो बिकॉज ऑफ दैट inversely proportional are between the speed of the blood flow and the cross sectional area. The blood they take more time in the venous system than the arteries. So thus under resting condition, the velocity average about 33 centimeter per second in the aorta, but only 0.3 millimeter per second as dipped in the capillaries. So we can see how much the speed has been reduced in the capillaries. Or because the capillaries have a typical length of 0.3 to 1 millimeter, the blood remain in the capillaries for 1 to 3 seconds. The short term is surprising because all diffusion of neutral blood cells in the electrolyte that occur through the capillary wall must do so this exceedingly short time. Now look at here. This is actually the comparison of the that pressure in the millimeter of mercury and different functional part of the circulatory system. We have the aorta, then the large arteries, the small arteries, arterioles, capillaries, venules, small veins, the large veins, the vena cava, and then we have the pulmonary arteries, arterioles, capillaries, the venules, and then the pulmonary veins. We can see here the pressure of the blood in the aorta is too much. Then in the large arteries, you can see here that the pressure remains the same almost, or there may be some increase as well. And फिर जैसी arteries से blood flow enter हो जाती है into the small arteries में, large arteries, small arteries, so the pressure of the blood जो है ये कम हो जाती है, arteriole में फिर और भी blood pressure गिर जाता है, और capillaries में भी further decrease आ जाता है, and when enter into the small veins, almost there is no pressure of the that blood। और चूंकि वहां पर प्रेशर कम होता है तो स्पीड कम होती है, और स्पीड और प्रेशर दोनों इसलिए कम है कि वहां पर क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है, और इसलिए ब्लड का ज्यादातर हिस्सा जो है एट अ सिंगल मोमेंट जो है वेनस सिस्टम दे कंटेन द लार्जर पार्ट ऑफ द ब्लड। उसकी वजह ये है कि वहां पे क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है, स्पीड कम है, ब्लड प्रेशर कम है, तो ब्लड जो है ये देर ज्यादा टाइम कर रहे थे, दैट्स व्हाई ज्यादा पोर्शन वहां पर रहेगा। And then this no pressure, they continued from the small vein to the large vein and into the vena cava. Then the pulmonary arteries may again, just like the systemic system in the arteries, the pressure, there will be some rise in the pulmonary arteries. Then again, there will be decrease in the arterioles, and then further decrease in the capillaries, and again further decrease in the venous and the pulmonary veins, and back to the heart. Now, what are the basic theories of the circulatory function? Uh, Three basic theories there, and the first one is the rate of blood flow to each tissue of the body is almost always precisely controlled in relation to the tissue need, as we have discussed in this previous 3-4 slide. The cardiac output is controlled mainly by the sum of all the local tissue flows. In general, the arterial pressure is controlled independently of the either local blood control or the cardiac आउटपुट कंट्रोल। सो जो है जो आर्टेरियल प्रेशर है इसका जो लोकल ब्लड फ्लो ज्यादा है, तेज जा रहा है, स्पीड कम है, स्पीड ज्यादा है, तो इसका इस पर कोई भी जो है आर्टेरियल प्रेशर पर कोई इफेक्ट नहीं है, और न कार्डियक आउटपुट का। सो दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लोकल ब्लड फ्लो एंड द कार्डियक आउटपुट कंट्रोल, सो दैट्स व्हाई द आर्टेरियल प्रेशर रिमेन the same.
Now, the rate of blood flow to tissue of the body is almost always precisely controlled in relation to the tissue need. What does it mean? It is not possible simply to increase the blood flow everywhere in the body when a particular tissue demands increased flow. तो हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था कि सपोज मसल को जो है ब्लड सप्लाई ज्यादा चाहिए, तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरे इस बॉडी को जो है इंक्रीज ब्लड फ्लो होगी। सिर्फ उस जगह को ब्लड फ्लो होगी जहां पे जरूरत है, बाकी जगहों को ब्लड फ्लो जो है रूटीन के मुताबिक होगी या थोड़ी सी कम हो जाएगी, टू टू इंक्रीज द कंसंट्रेशन टुवर्ड द प्लेस जहां पे जरूरी है। सो ये पॉसिबल नहीं है कि जहाँ पे अगर किसी एक छोटी सी जगह पे ब्लड फ्लो की जरूरत ज्यादा है तो एज अ होल पूरी बॉडी को ब्लड फ्लो ज्यादा मिलेगी। तो फिर होता क्या है इसकी जगह? सो इंस्टेड ऑफ दैट द माइक्रोवेसल ऑफ ईच टिश्यू कंटिन्यूसली मॉनिटर टिश्यू नीड, कि वहां पे जरूरत कितनी है, जहां पे जरूरत ज्यादा होती है सिर्फ वहां पे जो है ब्लड फ्लो ज्यादा होगी। So such is the availability of oxygen, other nutrients, and the accumulation of carbon dioxide and other tissue waste products, and thus these in turn act directly on the local blood vessel, dilating or constricting them. अगर वहां पे सपोज किसी जगह पे ब्लड फ्लो ज्यादा चाहिए और जल्दी चाहिए तो वहां पर वेसो कंस्ट्रिक्शन होगी। वेसो कंस्ट्रिक्शन से ब्लड फ्लो जो है ये ज्यादा होगी, तेज जाएगी। और एज कम्पेयर जहाँ पे ब्लड फ्लो नहीं चाहिए तो वहां पर डायलेशन होगी। वेसो डायलेशन यानी वेसल जो ये डायलेट हो जाएंगे तो वहां पर ब्लड फ्लो जो है ये कम हो जाएगी। तो कंट्रोल द ब्लड फ्लो प्रिसाइजली टू दैट लेवल रिक्वायर्ड फॉर द टिश्यू एक्टिविटी। सो इसी तरह जो है ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि कौन सी वेसल जो है इनको कंस्ट्रक्ट होना है, कौन सी वेसल को डायलेट होना है। The next is the cardiac output is controlled mainly by the sum of all the local tissue flows. अब यहाँ पे देखिए किसी जगह पे ब्लड फ्लो ज्यादा जरूर है, वहां पे ज्यादा ब्लड फ्लो जा रही है, किसी जगह पर कम, जैसे हमने एक्सरसाइज की मिसाल दी कि ड्यूरिंग द एक्सरसाइज ब्लड फ्लो टुवर्ड द स्केलेटल मसल ये ज्यादा होती हैं। एंड दैट इज डिपेंडिंग कि आप कौन से मसल यूज, सपोज इफ यू आर रनिंग सो द ब्लड फ्लो टुवर्ड्स द लोअर लिम्ब मसल दैट विल बी टू मच। सपोज इफ समवन इज बॉक्सिंग तो वहां पे जो है लोअर लिम्ब के साथ साथ अपर लिम्ब को भी ज्यादा ब्लड फ्लो होगी, और एट द सेम टाइम कुछ जगहों को ब्लड फ्लो कम होगी। तो ये जो ज्यादा ब्लड फ्लो टू सम टिश्यूज एंड कम ब्लड फ्लो टू द सम टिश्यूज, ये दोनों का कंबाइन करके ओवरऑल जो है ये कार्डियक आउटपुट जो है बनेगा। So when blood flows through a tissue, it immediately returned by the way of the veins to the heart. The heart responds automatically to this increased blood flow, inflow of the blood by pumping it immediately into the arteries from whence it had originally come. So इस तरह जो है ब्लड कंट्रोल किया जाता है कि जहां पर भी जो है जरूरत पड़ती है तो उसी के मुताबिक जो है वह जो है ये ब्लड फ्लो दे देते हैं, अपने ब्लड फ्लो जो है ये हार्ट को वापस दे देती है, और फिर हार्ट जो है दोबारा उस जगह को पंप करेगा जहाँ पे जरूरत ज्यादा है। तो इसी तरह ये सर्कुलेशन जारी रहती है और कार्डियक आउटपुट जो है ये इज कंट्रोल बाय the sum of all the local tissue flows. In general, the arterial pressure is controlled independently of the either local blood flow control or the cardiac output control. ये तो हमने डिस्कस कर दिया कि वहां पर जो है circulatory system is provided with an extensive system for controlling the arterial blood pressure. If at any time the pressure falls significantly below the normal level of 100 mmHg, within second a barrage of nerve reflexes elicit a series of circulatory changes to raise the pressure back towards normal. तो ये जो प्रेशर अगर कहते हैं कि प्रेशर जो है ये 100 मिलीमीटर ईजी से मरकरी से कम गिर जाता है तो वहां पर नर्व रिफ्लेक्सेस यानी नर्व एक्शन में आ जाते हैं और ये कुछ ऐसी चेंजेस कर लेते हैं जिससे ये प्रेशर वापस अपने नॉर्मल लेवल पे आ जाता है। और वो क्या क्या चेंजेस है, तो उसमें से एक तो ये है कि वहां पर हार्ट पंपिंग जो है ये इंक्रीज कर देता है जिसकी वजह से ब्लड फ्लो ज्यादा आ जाती है, और जब पंपिंग तेज हो जाती है तो वहां से ऑब्वियसली प्रेशर इन द आर्टरीज जो है ये इंक्रीज हो जाएगी। तो ये जो बिलो द नॉर्मल जो प्रेशर गिर गया था ये वापस नॉर्मल पे आ जाएगा। इसी तरह सेकंड जो मैकेनिज्म वो ये है कि कास कंट्रैक्शन ऑफ द लार्ज वेनस रिजर्वायर टू प्रोवाइड मोर ब्लड टू दैट। अब चूंकि
और हार्ट जो है ये ज्यादा पंप करेगा तो ब्लड भी उसको ज्यादा चाहिए होगी, और यही वजह है कि वहां पे जो वेनस रिजर्वायर है उनके कंट्रैक्शन, उस वेसल के कंट्रैक्शन होती हैं, जिससे हार्ट को ब्लड ज्यादा मिलेगी और वो जल्दी जल्दी ज्यादा पंपिंग करेगा। थर्ड जो मैकेनिज्म ये एक्चुअली ये नर्व रिफ्लेक्सेस करते हैं इन द सर्कुलेटरी चेंजेस, दैट इज द जनरलाइज्ड कंस्ट्रक्शन ऑफ मोस्ट ऑफ द आर्टरियोल्स थ्रू द बॉडी। और हम तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जब वहां पे लोकली किसी आर्टरी की वेसो कंस्ट्रक्शन हो जाती है तो वहां पर न सिर्फ ये कि स्पीड ऑफ द ब्लड जो है ये इंक्रीज हो जाएगी, बल्कि उसका ब्लड प्रेशर जो है ये भी जो है इंक्रीज हो जाएगा। सो ये एक तीसरा मैकेनिज्म है जिसकी वजह से ये उसका जो ब्लड प्रेशर, ये प्रेशर जो है ये 100 मीनिंग जी विच इज नॉर्मल लेवल से नीचे गिर गया तो ये वापस अपने नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा। Then over more prolonged period hours and days, the kidneys play an additional major role in pressure control, both by secreting the pressure controlling hormone and by regulating the blood volume. So ये एक अलग कहानी है कि इस तमाम मैकेनिज्म के साथ साथ जो है किडनी जो है ये भी जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिकल रोल अदा करती हैं इन द मेंटेनिंग द ब्लड प्रेशर, कि जहाँ पर ब्लड प्रेशर नॉर्मल से ऊपर चले जाते हैं तो किस तरह इसको नीचे लेके आता है, और अगर ब्लड प्रेशर नीचे चले जाते हैं नॉर्मल लेवल से तो वापस इसको ले आते हैं। तो ये वेसो डायलेशन, वेसो कंस्ट्रक्शन, इंक्रीज डिक्रीज ऑफ द हार्ट रेट के साथ साथ जो है किडनी भी जो है मुख्तलिफ हार्मोन्स के जरिए प्रेशर को कंट्रोल करते हैं। Now, what is the relationship between the pressure flow and the resistance? So, remember this thing ki jo if which is actually blood flow, this is directly proportional to the pressure difference, and at the same time it is inversely proportional to the resistance. तो जितनी ज्यादा resistance होगी उतनी ही जो है ब्लड फ्लो होगी, और जितनी ज्यादा जो है प्रेशर डिफरेंस होगा उतनी ही जो ब्लड फ्लो ज्यादा होगी। तो रेजिस्टेंस कम होगी तो ब्लड फ्लो तेज होगी, और अगर ब्लड प्रेशर कम होगी तो ब्लड फ्लो स्लो होगी, क्योंकि दे बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फॉर एग्जांपल, इफ द प्रेशर एट बोथ एंड्स ऑफ द वेसल इज 100 mmHg एंड एक एक वेसल है उसकी एक एंड ए दूसरा एंड बी है, एक एंड ए पर भी 100 mmHg है एंड बी पर भी 100 mmHg है। अब दोनों एंड्स का अगर हम सब्ट्रैक्शन कर ले तो 100 माइनस 100 विल इक्वल टू 0। अब चूंकि यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं है तो यहाँ पर देयर विल बी नो ब्लड फ्लो। हालांकि यहाँ पर ब्लड प्रेशर कितना है 100 mmHg है, लेकिन जिस जगह से जा रहा है, जिस जिस जॉइंट से जिस जगह से स्टार्ट होगी और जिसकी तरफ जाएंगे वहां पर डिफरेंस होना जरूरी है। तो अगर ये डिफरेंस सपोज वो एक जगह पे 100 है दूसरी जगह पर 90 है तो फिर यहाँ पे डिफरेंस 10 हुआ एंड देयर विल बी ब्लड फ्लो। बट इफ both ends have the 100 mmHg and A is also having 100 mmHg and we also having 100 mmHg, so the difference will be equal to 0, hence there will be no blood flow. This relation comprehends to the hemodynamics of circulation. So that's all about the circulation. Now, what is the blood flow? We can see here the passage of the blood at any point in the vessel is known as the blood flow by definition. And this is the, suppose the end A, this is the end B, this is the pressure 1, and this is the pressure 2. Now, the difference between this pressure is directly proportional to the blood flow. Higher the difference between these two pressures, higher the blood flow will be, and this is the resistance. Now, if there is too much resistance, so the blood flow will be less, and as compared to if there is no such resistance, so there will be blood flow will be more and more. Blood flow means simply the quantity of the blood that passes a given point in circulation in a given period of time. This is the definition of the blood flow as we have discussed. This is expressed normally in millimeters per minute, but they can be also expressed in liters per minute. But it can be expressed in millimeters per second or any other unit of flow. The overall blood flow is the total circulation of an adult person at rest is about 5,000 milliliter per minute. This is called the cardiac output. That is the end of today's session. Thank you so much to all of you.